So why business needs finance? Can anybody answer? What do you mean by business finance? What do you mean by business finance? बेटे आज आंसर्स Sir, दीजिए. to ensure the business. Sir, business needs money for various conduction of activities. That money is known as business finance. Okay. Without funds, business cannot be operated. ठीक है? Business needs funds at every step, and without adequate funds, business activities cannot be operated, and the business will be in great trouble and losses. So, what are the various needs of business where the finance is required? Can you name some? Sir, money मतलब income. हाँ. Sir, purchase machinery, building, land, then paying salary, and for transportation, these all things. Okay. ठीक है. So there are two types of capital. Bhavya है ना ये BM? Yes, sir. Yes, Bhavya. There are two types of capital. Name them. Beta, don't open your. Sir, I'm not. Answer me. Sir, I don't know. Okay. Usman, Yes, sir. there are two Hello? types of capital. There are two types of funds. Can you name them? Sir, Sir, working and fixed. What? Sir, working and fixed. Very good. So one is fixed capital and one is working capital. So what is fixed capital? Fixed capital is required for assets, for purchase of assets, to open a new. मतलब fixed capital जो है आपको long term के लिए चाहिए होती है. आपने एक कार खरीदी, वो आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बेचेंगे नहीं. वो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, सिर्फ 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल. ठीक है? हर दूसरे चौथे महीने में आप वो कार बेचेंगे नहीं. तो दैट इज फिक्स कैपिटल. जो उसमें आपने पैसा लगाया, दैट इज फिक्स कैपिटल. जो which serve you for more than 1 year. That is fixed capital. Like purchase of machinery, building, opening a new branch, purchase of vehicle, etc. etc. ठीक है? So fixed capital funds are needed to buy fixed assets such as land, building, furniture, plant and machinery, etc. Then what is working capital? Tarang? Sir, working capital is required on daily basis, like paying salaries of workers, then purchasing small things, giving bills, stock, these all. So working capital is required to fulfill the daily needs of the business. ठीक है? Daily जो आपको expenses की जरूरत होती है, it is circulating capital. आपको purchase of raw material, paying the salary, paying the rent, paying the electricity bill, paying the repair of machinery, that is all comes under working capital. So both are important. देखिए fixed capital के क्या फायदे हैं? Fixed capital आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है. फिक्स्ड कैपिटल आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है. कैसे? मान लिया हमारे पास एक मशीनरी है, एक दुकान है, उसमें फोटोकॉपी मशीन लगी हुई है, एक मशीन लगी हुई है. अगर वो एक और लगा ले तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे. एक और लगा ले तो और बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन होगा, और प्रॉफिट्स होंगे. ठीक है?
So fixed capital increase the profit and working capital maintains the profit. उसमें आप वर्किंग कैपिटल हमने सैलरी पे करते रहेंगे अपने एम्प्लॉयज को टाइम पे, वर्कर्स काम करते रहेंगे, नहीं पे करेंगे भाग जाएंगे। रेंट होगा, रेंट हम टाइम पे करते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, हम परचेज रॉ मटेरियल टाइम पे हम पेमेंट्स करते रहेंगे, हमारा मतलब बिजनेस रन करता रहेगा। इट वर्किंग कैपिटल डज नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट्स, इट जस्ट मेंटेन्स द प्रॉफिट, बट फिक्स्ड कैपिटल increase the profit, increase the productivity and profits. Working capital maintains the profits and the production. ठीक है, so various there are various sources of funds or business finance. What are they? Two sources of finance in a business organization. Two sources of finance. Name those two. Yes, Usman. The loan from that financial institution was one. Loan Then from financial institution. No, I don't want that. I need only there are two sources of finance. Yes. That is for social welfare. The company gives funds. Now, I need sources of borrowed funds, and what are the second one? There are two sources of finance, two main sources of finance: borrowed funds and owner's fund. Okay. There are two sources of finance. 1 second, I should have brought a pen, marker. Yes. So there are two sources of funds. One is owner's fund. Owner's fund. And second is borrowed fund. Borrowed funds. Okay. There are two sources of fund: owner's fund and borrowed funds. What comes under owner's fund? Owner's fund में क्या क्या आता है? the preference shares, then global depository receipts, Equity retained shares, earnings, equity shares, preference shares, and equity shares, preference shares, and retained earnings, retained earnings, and Indian depository receipts, IDR, Indian Depository Receipt, ADR, American Deposit Receipts, and GDR, Global Depository Receipts. Okay, these 6 comes under owner's fund. Here, what comes under borrowed funds? What is the most important borrowed fund? debenture, Debentures. Debentures and loan from financial institutions and loan from bank, loan from commercial bank,
financial institutions loan from bank, any other source? और कोई है? Public deposit. Public deposits. Public deposits. और कोई है? और कोई है? One is trade credit. The Trade. हाँ जी. the preference shares. Preference shares ये मैंने लिखा बेटे. It comes under owners fund. ठीक है? Yes, sir. Trade credit and inter corporate deposit. These are the borrowed funds. ठीक है? ये सारे मेनली ये सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू फंड्स अरेंज किए जा सकते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? मेनली मैनेजर को ये तरह why so much of nuisance is coming. चलो तरंग ये डिस्टरबेंस क्यों आ रही है? Where is Tarang? Yes, sir. Now it's okay. Now it's okay. It was from your side. So these are the 12 sources of finance which can arrange funds for a business organization, for a joint stock company. Okay, and other business organizations also. Now, main thing, what finance manager has to decide which fund he should adopt to arrange the finance. देखिए फाइनेंस 1-2 लाख नहीं चाहिए होता है, करोड़ों में चाहिए होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को. इट मे बी हंड्रेड्स ऑफ करोड्स. अभी 1 साल पहले 3000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी ने चाइना के किसी बैंक से लोन लिया है. 3000 crores. Do you know? And now when China is our enemy, then he is refusing to pay the loan. ठीक है, हमारा दुश्मन है, उसको मैं एक पैसा वापस नहीं करूंगा. अनिल अंबानी का ये स्टेटमेंट है. तो 3000 crores, कैन यू इमेजिन? इतना लोन उठाते हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो अब उनको ये डिसाइड करना होता है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमको कितने पैसे की जरूरत है. फिर ये डिसाइड करना होगा कि हम ओनर्स फंड इशू करेंगे या बोरोड फंड्स इशू करेंगे. ठीक है, कहां से हम किस सोर्स से फाइनेंस लें. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो सोर्स पहले तो ये डिसाइड करेंगे ओनर्स फंड से क्या होगा. हम कंपनी में ओनर्स लेके आ रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा. तो वेदर अगर मेरी एक कंपनी है और हमको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम पहले ये डिसीजन लेंगे कि हम ओनर्स फंड के थ्रू पैसे फंड्स कलेक्ट करेंगे या बोरोड फंड्स. ओनर्स फंड में क्या है कि हमको अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा इनके साथ. ठीक है, और बोरोड फंड्स में क्या है, हमको रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर हम अपनी ओनरशिप बांट रहे हैं. फंड्स तो आएंगे लेकिन हमारी ओनरशिप कम होती जाएगी. हम 1000 करोड़ के मालिक हैं तो और हमने 100 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए तो अब हम 900 करोड़ के मालिक रह गए. ठीक है, कहने का मतलब ये है. आपको मालूम है मुकेश अंबानी की अभी लॉग वेल्थ एक दिन में
48,000 crores अप्रॉक्स कम हुई। क्यों? क्योंकि उनके शेयर्स की वैल्यू कम हो गई। 48,000 crores की वैल्यू एक दिन में कम हुई। अभी कुछ दिन पहले मार्केट क्रैश हुआ है। 40 और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। He has plenty of money। ठीक है, तो ओनरशिप हम बांटे ओनर्स फंड में, या हम लोन लें और यहां पर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करें। तो ये दोनों केसेस दोनों हैं। फाइनेंस मैनेजर जो कंपनी का होगा, he has to decide which path he should adopt। ठीक है, किसमें ज्यादा पैसे कम होंगे, किसमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कौन सा फंड इजीली अवेलेबल हो जाएगा उनकी कंपनी को, ये सारी चीजें उनको डिसाइड करनी होती। तो गो थ्रू दीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस, जो जो डिफरेंसेस आपकी बुक में दिए हुए हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। Sir, Yes. which is more applicable? What? Sir, which is more good between these two? It depends on the current conditions prevailing in the company। आप डिपेंड, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको। ये तो मैं बिल्कुल एकदम क्रीम बता रहा हूं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट आ रहे हैं, कंपनी के पास हर साल बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, तो वो बोरोड फंड इशू करेगी, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना आसान है उनको। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, अगर आपका हर साल 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 25 लाख का इंटरेस्ट आराम से पे कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका 30 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप 25 लाख का इंटरेस्ट पे करेंगे तो कहां जाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, तो sir. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इन द कंपनी कि वो कौन से शेयर्स। अब बहुत ज्यादा शेयर्स पहले ही हम इशू कर चुके हैं, इससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते, तो हमको मजबूरी में बोरोड फंड्स में ही जाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस which finance manager has to analyze and then decide which fund should be good for the health of the company। Okay, sir. Now go through this, and if you have any problems, you can contact। Thank you।